Good afternoon, student. Welcome to the virtual class. Today, we are going to learn question 7A and B of writing skill. So, till date, if you see previous video, we are focusing on writing skill, which carries 25 marks. Out of that, question 5A, B, that is question 5A, that is letter writing, informal to formal. B, non-verbal to verbal. Slowly, we completed question 5 and 6 and we are focusing on question number 7. Okay, question number 7 has a two option. Question number 7A and question number 7B. This is question number 7A and question number 7B. Okay, both carries 5 marks. There is an option or in between. Either you can attempt this or either you can attempt this. Let us focus on expansion of theme. How the expansion of theme is there. So see, if expansion of theme is there, title and the beginning carries 1 mark. Grammar carries 1 mark. Appropriate points carries 1 mark. Logical order carry 1 mark and conclusion carry 1 mark. So total is 5. If you see in slide, expansion of theme matlab, you will get a proverb or a quote or any type of slogan. You have to understand the meaning of the proverb, what exactly the proverb is, and then you have to explain it in brief. Okay, you have to expand the theme. मतलब जो टाइटल दिया गएगा उसको आपको समझ आएगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या प्रोवर्ब दिया गया है और उस प्रोवर्ब को समझ के आपको पहले क्या अंडरस्टैंड करना है. टाइटल और बिगनिंग लिखना है. पहले प्रोवर्ब को समझ के लो और आपको एक्सपांड है. इसके लिए क्या है एक्सपांशन ऑफ थीम. मतलब यू हैव टू एक्सपांड द प्रोवर्ब बट इन अ लॉजिकल वे. ओके, grammar, appropriate points, that means there should be no random points and events. Okay, there should be a proper logical events with a logical reasoning. Okay, ये जो proverb दिया गया है उस proverb को कैसे explain करना है. If you see the slide, पहला है understand the literally and symbolical meaning of the proverb. मतलब जो proverb दिया गया है उसको पहले समझ के लो कि ये proverb किस बारे में है. फिर एक्सप्लेन द फर्स्ट लिटरली ऑन द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब. फिर पहले वो प्रोवर्ब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो बट बिगनिंग शुड बी गुड. द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन. गिव अ स्टोरी और इलस्ट्रेशन टू सपोर्ट सिंबॉलिक मीनिंग इन शॉर्ट. मतलब आप जो एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हो उसमें आप इलस्ट्रेशन दे सकते हो, कोई स्टोरी दे सकते हो, कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो प्रोवर्ब को समझाने के लिए. जो प्रोवर्ब है उसको समझाने के लिए आप एग्जाम्पल देके भी ये कर सकते हो. आपको लॉजिकली उसको एक्सटेंड करना है. ओके, लॉजिकली यू हैव टू राइट एवरीथिंग. कंक्लूड विथ व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट प्रोवर्ब. मतलब जो प्रोवर्ब आप लिख रहे हो उसका कंक्लूड बताओ कि आप उससे क्या सीखे हो. राइट द एक्सपेंशन इन 1 or 2 पैराग्राफ एंड विद इन 20 लाइन्स. ओके, वी विल सी द एग्जाम्पल सो दैट यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज. अभी टाइटल देखो क्या है. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ. तो पहले प्रोवर्ब को समझ के लो कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है. तो इसके रिलेटेड आपको क्या इवेंट याद आ रहा है या क्या एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हो विच इज लॉजिकल एंड विच हैज अ लिटरली मीनिंग विद द प्रोवर्ब. जो प्रोवर्ब का जो ये है मीनिंग उसको आपका वो इवेंट लिटरली मतलब मीनिंगफुली ज्वाइंट होना चाहिए. तो ये आप उसको ये कर सकते हो. लेट्स सी इन द स्लाइड. There are students who do not study all throughout the year and then one day before the examination they go to the temple making offering, performing puja and think that God will answer their prayer and give them good result in the examination. Such students will find much to their dismay that God does not help striver. He only helps those who helps themselves. मतलब टाइटल क्या है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक स्टूडेंट लाइफ का कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते और फिर भगवान के मंदिर में जाके प्रे करते हैं कि उनको पास कर दो करके. तो ये टाइटल से एकदम रिलेटेड है. द मीनिंग इज मैचिंग टू दैट. इफ यू हेल्प योर सेल्फ, if you study and if you are believing in yourself, then God will help you. But if you won't study, then God won't help you. मतलब God helps those who helps themselves. So see, the proverb is literally connected to the meaning of that paragraph.
सो आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया के साथ ऑप्शन है रिपोर्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 7A 5 मार्क के लिए आता है। ए में यू हैव ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर ए दैट इज एक्सपांशन ऑफ थीम एंड रिपोर्ट राइटिंग। इन दोनों में से आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स गो फर्दर इन दिस स्लाइड। There is a story of a scientist who worked for years in order to find out the cause of malaria. He had performed hundreds of experiments and almost gave up hope. Then he prayed and fell asleep. The next morning he woke up with a new idea in hand. He tried it out and lo and behold, he had found the cure of malaria. Thus we see the God helps only those who helps themselves. मतलब यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल दिया गया है साइंटिस्ट का दैट वो कंटिन्यूसली ही डज समथिंग बट ही डजंट गेट सक्सेस बट ही इज वर्किंग हार्ड his hardship is seen. Okay, then he gets a through continuously practicing an experiment, he gets the solution of the malaria. So here the title, whatever the proverb is, God helps those who helps themselves, is truly related to the event. इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, प्रॉपर पॉइंट्स एंड सीक्वेंस होने चाहिए, बट इट शुड हैव लिटरली मीनिंग विद दैट प्रोवर्ब. So question 1A, expansion of ideas, carry 5 marks. Okay. Then let's see further. This is because God has given us all the talent, attributes and the thinking power to achieve what we want. After being given all these, why should we again rely on God to achieve success? We should rely on the gift that God has created us to make a progress in life rather than on God to do it for us. So उसने एकदम अच्छे से easily he has concluded, but the conclusion is very good. What is telling? Why we should rely on God? क्यों हम लोग गॉड के लिए रुके रहे जबकि गॉड हैज क्रिएटेड अस, ही हैज गिवन हैंड्स, लेग्स एंड पावर टू अचीव एवरीथिंग. देन रादर रिलाई ऑन गॉड, लेट अस प्रोग्रेस आवर लाइफ इन बाय आवर ओन rather than being rely on God. God will definitely help us, but we can do that. We can achieve, then why can't? So this is expansion of idea. This is the way the proverb should be extended on your own, in your own examples and illustration, but it should have a literary meaning with the proverb. That again there is one more topic, expansion of idea. My title is the nature the best teacher. So here also understand the proverb, exactly what the proverb is trying to say, that nature is best teacher. So let us know what exactly the writer wants to say. Of all the teachers who have helped shape my life, I would say Mother Nature has been the best. For not only does she likes a mother, nurtures her people, but like a strict disciplinary punishment student who step out of line. A student of nature learn lesson through his lifetime. He learn about the world around him as a natural class has no boundary or time work. So here see this the title is that whatever the title is that it is totally related to the proverb. So understand, you have to first understand the proverb. Next, health is wealth. So this is very easy. So क्या है health is wealth? मतलब अगर health अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है. It's like that. So understand what is the proverb. When you understand the proverb, you have to write the literally meaning in your explanation. So see, what is use of having million and billion in one bank account yet not enjoying a good health? So here it is related to health. A healthy man can enjoy the benefit of his wealth, but a wealthy man always followed by physical complaints if he is not healthy. So here everything is related to health. So health is wealth. Matlab if you are having good health, that means you are wealthy. And the paragraph is totally related to what the proverb is saying. So this is a way expansion of theme is written. Let's move further to report writing. Report writing. So first we will understand the mark system of report writing, and then I will give you the explanation how exactly you have to write a report. Report writing में title or headline and dateline carries
1 mark. Sequence of event, how the event has occurred, carries 2 marks. Okay. Grammar and vocabulary carries 1 marks. Conclusion carries 1 mark. That is a total 5 marks question. Okay. So first keep it in mind. We will have proper explanation. So let us see to the slide what is report writing. A report writing, tips of report writing, read the headline, topic and visualize the event. जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास, पहले आप उसको रीड करो, समझ के लो और वो इवेंट के बारे में सोचो कि आपको कैसे रिपोर्ट लिखना है. Give a catchy title or headline. Provide by place and date in the beginning. Mention after the title who reported the article. Use past tense and report speech. Report exactly as it happened and what you have observed. A good report answers who, when, what, why, how related to subject. पहले समझ के लो, जब आप रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन पढ़ते हो, व्हेन यू रीड द रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन, विजुअलाइज what all series of event you want to write. Okay, compulsory write a title of the report. टाइटल लिखना जरूरी है. हेडलाइन, हेडलाइन लिखने के बाद it should be eye catching. मतलब if you go for this, I would like you guys to have a homework. Whenever you get up early in the morning, take a newspaper and observe how the reports are written and then analyze these points with that report. It will be easy for you guys to write a report. Headline is more important. Headline, dateline, ये बहुत important है. So headline होने के बाद dateline, दो paragraph and conclusion. So first and everything should be in past tense. Okay, or reported speech. I will give, let us see the example and on through that example I will explain it. Okay, so यहाँ पे first dateline, dateline में headline में an illiteracy question क्या लिखा है, prepare a news report on the following headline. So यहाँ पे आपको headline दी गई है. So headline is given, that is headline अगर दिया गया है, headline first should be headline. Okay, and who has reported the speech? Let us keep option. Then date and place. Please see the in the slide. It is first place and date followed by year. That is venue and the date. Almar, 15 September 2019. Then it is the body part of a report. First para and second para. Okay. First para, in first paragraph, you have to answer what, when, how, where, why. कब हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, ये पहला सारा पहले पैराग्राफ में आएगा. In second para, there will be detail with conclusion. And this is the way a report is written. Headline, place, date. You can write the reporter's name if given. इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ में when, why, how, what ये सब आएगा. When the event happened, how it happened, who were there, what was the reason, everything. So all WH questions should be answered in first paragraph. And in second, there should be a detail with a conclusion. And this is the way a report is written so that you will be easily keep and write this report. If you see in slide, adultery history program था in Amar on 15 September 2019. About 50 students, मतलब what, where happened, why, how many, so how many से आया? About 50 students of standard 10th A from New English High School Armara, along with 5 of their teacher, went to the nearby locality and contact about 25 adult illiterate men
illiterate men and 6 women from the slum and planned the program to educate them. According to their syllabus, they planned to teach them the alphabet in English, Marathi, reading and writing. One to know. So ये क्या हुआ, कब हुआ, किस जगह पे हुआ, किस ये पहला पूरा डिटेल उन लोग ने फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिया गया है, राइट. और सेकेंड पैराग्राफ में एट फर्स्ट दे हैड ओनली 35 एडल्ट्स बट लेटर ऑन इम्प्रेस्ड बाय द इंटरेस्टिंग मैनर ऑफ टीचिंग दैट. सो यहाँ पे सेकेंड में उन्होंने डिटेल दिया गया कि पहले 35 ही थे, उसके बाद धीरे धीरे टीम मेंबर्स बढ़ने लग गए एंड द स्टूडेंट वेर एक्सट्रीमली रिवॉर्डेड एंड ऑल. सो दिस वे कीप दैट हेडलाइन शुड बी देयर, वेन्यू एंड द डेट शुड बी देयर. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ उसका इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करने का, सेकेंड में डिटेल विद कंक्लूजन देने का. दिस इज द वे अ रिपोर्ट राइटिंग इज written. If you observe the second, see again they have given the headline and the remaining part is here. I would have, guys, please do this homework. It is easy to write a report writing. So question 7a mein you have two option, that is one expansion of idea and second report writing. In that you can able to write any one which carries 5 marks. Now question 7b. Question 7b में developing a story है. This is the most easiest to write. Okay, question 7. Question 7b is developing story. Tips of writing a story. That आपको you have given the beginning or the ending of the story. Okay, read the given beginning or ending line and visualize the story accordingly. So आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ द स्टोरी दिया जाएगा. ये स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी के 2 लाइन दिए जाएंगे. उन लाइन को समझ के आपको स्टोरी आगे बढ़ानी है या एंड करनी है. ओके, सो गिव अ सुटेबल एंड इंटरेस्टिंग टाइटल. डेवलप द स्टोरी स्टेप वाइज. इंट्रोडक्शन, एक्शन एंड कंक्लूजन. So if there is a beginning of the story, आपको अगर beginning दिया रहेगा तो आपको उसको end करना है और ending दिया रहेगा तो begin करना है. So introduction अच्छा होना चाहिए. Introduction should be there. Action, whatever the story is action, and conclusion. This plays a vital part in developing story. Okay. Describe more creatively and logically and connect the event. So creative होना चाहिए, logical होना चाहिए और series of event एक साथ sequence में होना चाहिए. Randomly किधर भी नहीं होने चाहिए. It should be short and well organized. Use given beginning or ending as it in story. जो क्वेश्चन में लाइन्स दिए जाते हैं वो यूज करने हैं आपको. Let us see the example. You will understand it nicely. अभी क्वेश्चन क्या दिया है? नरेट एन एक्सपीरियंस. आपको एक नरेशन करना है एक्सपीरियंस का इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, बिगनिंग विथ. सो ये बिगनिंग ही रहेगा, ये आपके स्टोरी का बिगनिंग रहेगा. सो इस लाइन के थ्रू आपको बिगिन करना है और आपकी स्टोरी विजुअलाइज करके कैरेक्टर्स को काउंट करके उनका इंट्रोडक्शन, एक्शन और कंक्लूजन सोचना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड. It was the first time travel with friends. Finally, the day of departure arrived and we began our journey. So आपकी स्टोरी का ये बिगनिंग रहेगा. अभी ये बिगनिंग को आपको कंप्लीट करना है और उसको एक एंडिंग देना है इन अबाउट 80 to 100 words. Okay, let's see. So see, guys, they have given the beginning. Narrate an experience in about 80 to 100 words, beginning with the following words. I was quite excited. It was the first time travel to the friends. Finally, the day of departure arrived and we began our journey. So देखो वही लाइंस को उन लोग ने लिया है. So पहले टाइटल दिया गया है. टाइटल क्या लिखा है? Fun filled duty. So they had that title carries marks. Okay. Then I was excited. ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था. I was quite excited. It was the first time with friends. Finally, the day of departure arrived and we began our journey. To begin of journey के बाद हम लोग को वो स्टोरी को कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू कैसे किया? Let's see. To the great Himalayas, the snow-clad peaks and the joy of being just with friends
without the controlling eyes and instruction of parents was beckoning us. So यहाँ पे विजुअलाइज किया कि वो पिकनिक में जा रहा है दोस्त लोग के साथ. तो कैसे जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है, वो इंट्रोडक्शन दिया उसने, क्या एक्शंस किए और क्या कंक्लूजन किए. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. How we excited we all were. The plan for this student special trip was fixed in December with the permission of parents. Of course, after our SSC exam, now we were in the train after a lot of excited planning. The train took off and our journey of freedom and joy began. We started chanting, eating, and playing. Little did we realize that our extreme noise must be casting distress on someone. It was almost midnight when an old man came to us and said, "Could you please lower your noise? My wife is not well and she needs sleep." We were ashamed. We expressed our regret and assured them to be quiet. Next morning, one of went to the compartment, asked the old man about any help we could do. The old man was traveling to their son's place where they would be taken care of. Well, all decided to help them. It was a long journey. We all did whatever we could to make both of them comfortable. When it was time to depart, we helped them unloading the luggage and carried it till they meet their son on the platform. That was the time, I suppose, first time we realized that true joy can be experienced someone by being selfless. Though someone of our plan from the train journey could not be fulfilled, but we enjoyed it. So see, जो बिगनिंग दिया है वो बिगनिंग में उन्होंने खुद से अपने एड-ऑन्स किए हैं, बट एवरीथिंग वाज इन सीक्वेंस एंड लॉजिकल थिंग. Okay, so introduction was given, the action of helping the old man was given, and they conclude that ki we realize that the true joy is experienced by something by being selfless. Though someone of our plans of the train journey could not fulfill, but we enjoyed. सो देखो प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया गया कि हम लोग एसएससी एग्जाम के बाद पेरेंट के परमिशन से ग्रेट हिमालयस पे जाने वाले थे. हम लोग ने देयर वाज एक्साइटमेंट, द ट्रेन टुक ऑफ, वो एक्शन किया गया. फिर क्या क्या नॉइज किया, द नॉइज वाज एक्सपीरियंस देन द ओल्ड. सो दिस वाज द एक्शन एंड दे कंक्लूडेड विद गुड टाइम. सो दिस वे अ डेवलपिंग स्टोरी इज रिटर्न. Okay, next one, let's see next one. Now here the ending is given. Narrate your experience in about 80 to 100 words. Given the following ending. Ending क्या था? And this how I found out the friend is friend in need. So यहाँ पे I can imagine. अभी मैंने ये टाइटल को समझ में ले लिया है. अभी मैंने इस टाइटल को समझने में I should visualize that what topic I should take. Either it is related to friend. So I have to write a experience which is related to my friend, which has helped me in such a way to change my perspective. और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, इसके लिए वो टाइटल था कि आई फाउंड आउट दैट फ्रेंड इन नीड इज रियली अ फ्रेंड इन डीड. सो ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ के साथ हुआ रहेगा कि मेरे को ये टाइटल या ये एंडिंग सूट करेगी. फिर मैं सोचूंगी उसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, किस हिसाब से हम दोनों मिले रहेंगे, हम दोनों दोस्त, कौन सा वक्त रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा, फिर ऐसी कौन सी एक्शन हुई रहेंगी जिस वजह से मुझे ऐसा लगने लगा है कि अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, और मैं क्या कंक्लूड करेगी. सो यू वेन एवर यू रीड इट, यू विजुअलाइज इट, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू राइट. ओके, लेट्स सी इट. सो सी, आई फाइंड माई बेस्ट फ्रेंड. सो आई हैव गिवन द टाइटल. इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है, वी हैव, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, वी हैव शिफ्टेड टू डोंबिवली इन दिस जून. आई वॉज अ न्यू टू द स्कूल. सो यहाँ पे उसने क्या इवेंट लिया कि वो उस दोस्त को स्कूल में मिला है. इट वॉज ऑल न्यू टू मी, येट आई वॉज नॉट फेमिलियर टू ऑल. One day after school, I was going back to home. It was raining, so I hired a auto. So ये उन्होंने उसका एक्शन बताया गया कि किस हिसाब से उन्होंने कैसी दोस्ती उनकी मिली. When I crossed the next lane of the school, I noticed a boy of my class waiting for a bus. So उसके लिए वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि बहुत जोरों की बारिश चल रही थी. इसके लिए मैंने ऑटो लिया और मैंने मेरे क्लास के एक दोस्त को बस स्टॉप पे खड़ा हुआ भीगता हुआ देखा. He had no umbrella.
So I stopped an auto and asked him to get in. He was hesitant, but I insist. After exchanging few words, we come to know about each other. His name was Sanjay and he was staying near my building only. The next day I reached school early. Sanjay was in class. I had not completed my maths assignment. I asked him to help me. He eagerly came and helped me to solve the sums. He was a brilliant student of maths and he had explained the concept with great clarity. Slowly, our friendship grew, and today Sanjay is my best friend. And the ending, see, ending is what? And this is how I found out that the friend in need is the friend indeed. So he has the whole event, he is connected to the ending of the story. So, this is a way a developing story is written. Okay. So till now we have studied question number 7a and b. In A there are two options, expansion of theme and report writing, and the last is developing story and narrating. Okay, so till now if we have a rough analysis, we have completed the whole writing skill of 25 marks. उसमें question 5a is letter writing. 5a letter writing है जिसमें formal and informal आता है which carries 5 marks. Then 6a आता है verbal to non-verbal and non-verbal to verbal. 6b आता है view and counter view and speech writing. ओके, सो दिस इज वे हम लोग का क्वेश्चन 5a राइटिंग लेटर राइटिंग का 5 मार्क, नॉन वर्बल टू वर्बल का 5 मार्क, क्वेश्चन 6a का काउंटर व्यू एंड स्पीच राइटिंग का 5 मार्क, क्वेश्चन 7a का एक्सपेंशन ऑफ थीम एंड रिपोर्ट राइटिंग का 5 मार्क एंड डेवलपिंग स्टोरी का 5 मार्क. सो वी आर 25 marks are in hand, and if you guys follow the proper format, you will able to score 25 marks in English paper. Thank you very much.